In the previous videos, we have discussed the phylum Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda. And now in this video, we are going to discuss the another phylum, and that phylum is Mollusca. जो फ्रेम हम लोगों ने बनाई है टू अंडरस्टैंड द फाइलम, उसी फ्रेम में हम मोलस्का को स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट इज जनरल characteristics. The first point is about the general characteristics. And the first general characteristic is the phylum Mollusca is second largest phylum of animal kingdom. जब आर्थ्रोपोडा पढ़ा था तो मैंने कहा था कि आर्थ्रोपोडा इज द फर्स्ट लार्जेस्ट, मोलस्का इज सेकंड लार्जेस्ट. आपको कंपैरिजन करके स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि नेट पैटर्न में क्वेश्चंस मोस्टली कंपैरिजन पे होते हैं. सो दिस इज फर्स्ट लार्जेस्ट एंड दिस इज सेकंड लार्जेस्ट. सेकंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक इज द मेंबर ऑफ मोलस्का का जो बॉडी है, दैट बॉडी इज कवर्ड बाय calcareous shell. Shell मतलब covering. Calcareous shell, that is the most important characteristics of member of phylum mollusca. कौन से? उन लोगों की जो बॉडी है, that body is covered by the calcareous shell. एक कवरिंग उनके ऊपर है क्योंकि the member of mollusca are soft bodied animals, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर एक कवर बनाया है, एंड दैट कवर इज इन द फॉर्म ऑफ द एक्सोस्केलेटन. सो बॉडी ऑफ मेंबर ऑफ मोलस्का इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल. कैल्केरियस सेल मतलब हार्ड एक्सोस्केलेटन. क्या है? इट इज हार्ड एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, से बना हुआ है. एंड उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है टू प्रोटेक्ट सॉफ्ट बॉडीड मोलस्क. मतलब बॉडी इज कवर्ड बाय द कैल्केरियस सेल दैट इज कवरिंग. कैल्केरियस सेल क्या है? तो हार्ड एक्सोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स. ये जो मेंबर्स है मोलस्का के सॉफ्ट बॉडीड होते हैं और वो सॉफ्ट बॉडी के ऊपर एक कवर बनता है, एंड दैट कवर वी कॉल्ड इट एज अ कैल्केरियस सेल. देन द सेकेंड पॉइंट इज special characteristics. स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि बॉडी जो है, बॉडी इज अनसेगमेंटेड. बॉडी इज अनसेगमेंटेड with distinct three part. Number one, head. Number two, muscular foot. Number three, visceral hump. So body कैसी है? Body is unsegmented with distinct, clear-cut differentiation, with distinct head, muscular foot and visceral hump.
यहाँ पर भी आप कंपेयर कर सकते हैं विथ ऑर्थ्रोपोड्स। उस वीडियोज में मैंने कहा था कि ऑर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी है डिवाइडेड इट इनटू द हेड, thorax and abdomen. यहाँ पर the body is unsegmented with distinct head, muscular foot and visceral hump. Then ये जो visceral hump है इसे दूसरा नाम भी है और it is also called as visceral mass. एंड ये जो visceral hump है और visceral mass क्या करता है? Secrete the calcareous cell, secrete calcareous cell और form calcareous cell. एंड इसका फर्स्ट फंक्शन है विसरल हम्प का, कौन सा? टू प्रोड्यूस द कैल्केरियस सेल। सेकेंड, ये जो विसरल हम्प है, दैट विसरल हम्प प्रोड्यूस क्या बनाता है? प्रोड्यूस अ मेंटल, प्रोड्यूस अ मेंटल, एक मेंटल बनाता है। एंड मेंटल कैसे बनाता है? तो इट प्रोड्यूस, और व्हाट इज मेंटल? तो मेंटल इज अ स्पॉन्जी, स्पॉन्जी और सॉफ्ट लेयर ऑफ स्किन, स्किन का एक स्पॉन्जी और सॉफ्ट लेयर बनाता है एंड उसे हम कहते हैं मेंटल, बोहर द विसरल हम्प। राइट, अब क्या हो गया है? हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प एंड मेंटल। राइट, अब जो मेंटल है, कहां तक आ गए हम कि बॉडी कैसी है? अनसेगमेंटेड है विद हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। विसरल हम्प को दूसरा नाम क्या कहा गया है? विसरल हम्प इज आल्सो कॉल्ड एज अ विसरल मास। विसरल मास का फंक्शन क्या है? तो विसरल मास का फंक्शन जो है, विसरल मास इज एबल टू परफॉर्म टू फंक्शन। फर्स्ट वन इज इट प्रोड्यूस द कैल्केरियस सेल एंड सेकेंड वन इज इट फॉर्म्स मेंटल। कैसे बनाता है मेंटल? मेंटल इज व्हाट? अ स्पॉन्जी और सॉफ्ट लेयर ऑफ स्किन। राइट, अब ये मेंटल इन बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल, मैं इसको मिटाता हूं सो कैन वी कैन राइट हियर हेड, मस्क्यूलर फुट एंड विसरल हम्प। विसरल हम्प क्या बनाता है? तो कैविटी, राइट, उसे कहते हैं मेंटल। राइट, अब there is a space between visceral hump and mantle, and that space is known as mantle cavity. उसे क्या कहते हैं? mantle cavity. There is a space between visceral hump and mantle, and उसे कहते हैं mantle cavity. This is mantle cavity. This is mantle. एंड मेंटल क्या है? स्पॉन्जी और सॉफ्ट लेयर ऑफ स्किन। और देयर इज द स्पेस, अब स्पेस होता है, किसमें स्पेस होता है? दिस इज मेंटल एंड दिस इज विसरल हम्प। In between mantle and visceral hump there is a space, and that space we called it as a mantle cavity. अब मेंटल कैविटी में क्या है? तो इन मेंटल कैविटी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फीदर लाइक, there is a presence of feather-like gills, right? In the mantle cavity, which is present between the mantle and visceral hump और mantle के बीच में एक cavity होता है, that cavity is known as mantle cavity, and उस mantle cavity के अंदर क्या होता है? A feather-like gills, and these gills perform the two function in mollusca. कौन से? The gills are first respiratory and excretory in function, and that is very important. So gills which are present in the mantle cavity क्या फंक्शन करता है? तो these are perform two functions. कौन से? Respiratory and excretory functions. So this is what about the respiratory and excretory. Now second point about the member of mollusk.
regarding their digestive system or how they obtain or how they capture the food, वो कैसे कैप्चर करते हैं. सो माउथ के अंदर there is a file like file like rasping organ, file like rasping organ, and उसे कहते हैं रेड्यूला, उसे कहते हैं रेड्यूला. सो प्रेजेंस ऑफ रेड्यूला इज इलेक्ट, नॉट डबल एल, रेड्यूला. सो रेड्यूला क्या है? माउथ के अंदर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला, एंड दैट रेड्यूला हेल्प्स टू कैप्चर food, to capture food. So presence of radula is the special characteristics of member of mollusca. And radula कैसे होता है? तो radula have such teeth like structures, and उसको हम कहते हैं rasping, and these teeth like structures present on the radula is help to capture the food. That is the another important point of member of mollusca. नाउ ए होने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एग्जाम्पल्स, कि कौन से मेंबर्स मॉलुस्का को रिप्रेजेंट करते हैं, फाइलम मॉलुस्का को रिप्रेजेंट करते हैं. तो सेकंड वन इज एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज पाइला, second one is sepia, third one is octopus, and fourth one is oyster, oyster, that is pearl oyster. So these are the four examples I have mentioned here. पाइला, दूसरा नाम जो है पाइला का, we also called it as apple snail. Sepia, that is cuttlefish. Octopus, 8 arms, that is devilfish. And last one is the oyster. उसमें से अगर हम पाइला देखेंगे तो मैंने पहले कहा था कि द मेंबर्स ऑफ मोलुस्का is covered by a calcareous cell, and calcareous cell is covering. That covering may be present externally, that covering may be present internally. एक्सटर्नली भी हो सकती है एंड इंटरनली भी हो सकती है, राइट. तो एप्पल स्नेल जो पाइला है उसमें कैल्केरियस सेल कैसा है? एक्सटर्नल, बाहर से है. सेपिया दैट इज कटल फिश, कैल्केरियस सेल कैसा है? इंटरनल. ऑक्टोपस दैट इज डेवल फिश, कैल्केरियस सेल इज absent, सेल इज absent, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कैसा है? सेल इज, यहां पर कैसा है? सेल इज absent, राइट. ऑक्टोपस जनरली बॉडी कैसा होता है? तो ऐसा एक ओवल बॉडी होता है, एंड फ्रॉम दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ आर्म्स. कितने आर्म्स होते हैं? टोटल 8 आर्म्स होते हैं. सो दीज आर आर्म्स, नॉट द टेंटाकल्स. हियर वी कैनॉट कॉल इट एज अ टेंटाकल, उसे हम आर्म ही कहते हैं. And this is arms, and arms के ऊपर there is a presence of suckers. Arms के ऊपर there is a presence of suckers, right? So this is octopus, and this is very important examples: Pila, sepia, octopus, and oyster. Or Pila, apple snail; sepia, cuttlefish; and octopus, devilfish. So this is very important part considering the members of mollusca. Now second, some things remain कि क्या क्या बचा है.
तो कुछ पॉइंट और भी ऐड करने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड द मॉलस्का, कि जैसे कि कंसीडरिंग देयर फर्टिलाइजेशन कैसे है। तो फर्स्ट, डायोइसियस। डायोइसियस का मीनिंग मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, राइट। डायोइसियस क्या है? सेक्सेस आर सेपरेट। दूसरा, दे आर ओविपैरस लाइक ऑर्थ्रोपॉड्स। ऑर्थ्रोपॉड्स भी ओविपैरस है, ये भी ओविपैरस है। ओविपैरस मतलब दे ले द एग्स। वी आर viviparous. Viviparous मतलब human being gives direct birth to the young ones, but these are oviparous मतलब they lay the eggs, eggs incubate, and from the egg after hatching young ones come, and जो adult के जैसा सेम दिखता है, right? So it is oviparous. Then डेवलपमेंट कैसा है इन लोगों में? डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। कैसा है? इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन में बी internal and external. So this is another important point considering the mollusca. एंड जो फ्रेम हमने इसको स्टडी करने के लिए बनाई, उसका जो लास्ट पार्ट है, एंड दैट लास्ट पार्ट इज कौन सा है? Yes, as usual, the last part is classification of the mollusk on the basis of classification. Basis of classification. एंड आपको पता है कितने बेसिस है? 6 बेसिस। फर्स्ट नोटोकॉर्ड, लास्ट सेगमेंटेड, बचे 4। हर एक का एक एक बेसिक को कंसिडर करके हम लोगों ने हर एक का एक एक वीडियो बना है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो कंसिडरिंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड बॉडी सिमेट्री, थर्ड डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ सीलो। इनको अगर हम कंसिडर करेंगे तो मॉलस्क का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? फर्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, बॉडी सिमेट्री, दे हैव बायलैटरल बॉडी सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, they are triploblastic. Coelo, yes, they are true coelomate. So this is what the classification considering the basis. They have organ system, level of organization, bilateral body symmetry, triploblastic and coelomate. यहाँ पर रिगार्डिंग सिमेट्री पर्टिकुलरली इन मॉलस्क, मैंने कहा है कि मॉलस्क कैसे है? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर एक कैलकैरियर स्ट्रॉन्ग एक्सोस्केलेटन का सेल है, कवरिंग है। अगर हम कवरिंग को कट करेंगे तो बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इट इनटू द टू इक्वल हाफ, मींस दे आर असिमेट्रिकल, राइट। बट अंदर की बॉडी को कंसिडर करेंगे तो दे आर सीलोमेट, right? So that feel that difference, feel that not coelomate, feel that body symmetry. So क्या क्या कौन से पॉइंट्स हमने यहाँ पर स्टडीड किए हैं? आई विल जस्ट टेक अ रिव्यू। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। सेकेंड पॉइंट, बॉडी इज कवर्ड बाय द कैलकैरियस सेल। थर्ड पॉइंट, बॉडी इज अनसेगमेंटेड एंड डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। विसरल हम्प को दूसरा नाम दिया है विसरल मास। उसका काम क्या है? टू फंक्शंस। फर्स्ट, टू सिंथेसाइज और टू सीक्रेट और टू प्रोड्यूस द सेल। सेकेंड, दे प्रोड्यूस द मैंटल।
एंड मेंटल क्या है? स्पॉन्जी और सॉफ्ट लेयर ऑफ स्किन। एंड देन उसके बाद मैंने कहा कि विसरल हम और मेंटल के बीच में एक कैविटी होता है, उसे कहते हैं मेंटल कैविटी। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, दैट इज गिल्स। एंड दैट गिल्स परफॉर्म टू फंक्शंस, नंबर वन रेस्पिरेटरी इन फंक्शन एंड सेकंड एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। देन पॉइंट डिस्कस किया कि माउथ के अंदर एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन है, उसे रेड्यूला कहते हैं, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलुस्का। क्या काम करता है? टू कैप्चर द फूड। ये पॉइंट होने के बाद मैंने कहा कि मेंबर ऑफ मोलुस्का कैसे डायोइसियस है, फर्टिलाइजेशन में भी इंटरनल और एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, एंड oviparous. They lay the eggs, hatch the eggs, and then young ones come. And last point, considering the basis. कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन सिस्टम। बॉडी सिमेट्री कौन सी है? बायलैटरल, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट। दिस इज ऑल अबाउट द मेंबर ऑफ मॉलुस्का। एंड एग्जांपल्स कौन से स्टडीड किए हैं? तो फर्स्ट पाइला, एप्पल स्नेक। सेकंड सेपिया, that is cuttlefish. Third, octopus, that is devilfish. And last, oyster pearl. So this is all about the phylum Mollusca. In the next video, we'll discuss the next phylum, and that is Echinodermata.